Okay, so good morning, all of you. So hope you all fine here. And Okay. today I am going to deliver a lecture which is based on input, output, and storage devices. Okay. So first of all, introduction. Okay. So in this part, we will discuss various input, output, and storage devices designed to meet the various needs. Okay. So this part explores the features available in these devices. So there are so many input, output devices uh, which are used in a computer, like a keyboard, your mouse, your joystick, your light pen, a trackball, and scanner, and graphic tablet, microphone, magnetic ink card reader, जिसको हम बोलते हैं MICR, and OMR, and barcode reader, optical mark reader, OMR. So basically, these are some of the important input devices which are used in a computer. Okay, so input in this lecture today in this lecture we will discuss about only input devices. Okay, आज हम input devices के बारे में बात करेंगे इस lecture में. So in next video we will discuss output devices and so on. Okay, so input devices, basically input devices capture information and translates it into a form that can be processed and used by other parts of your computer. It means input devices capture your information, like which information that you entered through keyboard, through computer, and other devices. Okay, so there are so many input devices like keyboard. I repeat, there are so many input devices like keyboard, pointing devices, game controllers, stylus is also you can say kind of a pointing device. You can enter the data through styluses. Okay, microphones Okay. is your input device, digital cameras and webcam. And you see, in previous lecture I have uploaded the YouTube video uh, of webcam. Okay, सब बच्चे वो देख लेना webcam का, ठीक है. So first Okay. of all, the keyboard. So basically the keyboard is the most common and very popular input device which helps to input data to the computer. Okay, this is very popular uh, device, input device. So the layout of the keyboard is like that of a traditional typewriter. Okay, it just seems like as a typewriter. So although there are some additional keys provided for performing additional functions. So there are so many keys on your keyboard, like your functional keys, like numeric keys, and your special keys and space bar button. So basically, keyboards are of two sizes: 84 keys or 101/102 keys. But now keyboards with the 104 keys or 108 keys are also available for Windows and Internet. So means मार्केट में बहुत सारे कीबोर्ड जो है वो अवेलेबल हैं जिनमें कीज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. सो द कीज ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलोज, लाइक your typing keys, and your function keys, numeric keypad, and control keys, and special purpose keys. Okay, so there are so many types of keyboards, like wireless keyboards, and multimedia and one touch access keyboards, and portable keyboards for PDA. Okay, so this is all about a keyboard input device. This is basically very important input device okay, today. So these are the input on your screen. You see, these are the types of input devices. Okay, and this is a mouse. Okay, and mouse basically of various types like wireless and wired mouse, and ये सारे input devices आपको show हो रहे हैं, ठीक है. This is your joystick, and this is your trackball. Okay, basically trackball used for this could be just seem like as a mouse, but basically this is used for gaming control and okay. So joystick, and joystick we mostly use for simulators like game simulator and so on, and these are the keyboards. Okay,
So pointing device. So basically, what is a pointing device? Uh, Pointing devices are mainly used to choose and enter commands. Okay, so pointing devices tend to have PS2 connectors or USB connectors. Means you can connect your pointing device through different ways, and one is through USB port, and second is very old like a PS2 connector. Okay, and what is the PS2 connector, and what is nowadays USB connectors are used in your computer in backside of your CPU. Okay, so what is PS2 connector? PS2 connector fits into a PS2 port, and which is small round socket with small holes that fit the pins on the connector. So in simple words, uh, एक पिंस होती हैं, ठीक है, वो पिंस को हम ज्वाइन करते हैं PS2 कनेक्टर को के साथ, ठीक है, वो पहले आते थे, अब नहीं आते. Nowadays we use USB connectors. So USB connectors fit into USB ports, and these are small rectangular openings on the back or front of your computer, or even on your keyboard or monitor also. Okay, so various pointing devices are available like mouse, trackball, touchpad, pointing stick, and these are the types of pointing devices. Okay, so basically, what is mouse? Basically, what is mouse? A mouse is the most popular pointing device. Okay, and it is a very famous cursor control device also, having a small palm size box with a round ball at its base. Okay, so in the at the bottom of your mouse, you see there is a small ball rotates left side and right side, and top and bottom side. Okay, so which senses the movement of the mouse and sends corresponding signals to the CPU when the mouse buttons are pressed. When you press the button, when you press the button of your mouse, it senses and sends the signals to the CPU. Okay, so generally it has two buttons called the left button and called the right button. Okay, and the right button and a wheel is present between the buttons. A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen, but it cannot be used to enter text into the computer. That's why it's called a pointing device, because you can just only click and just select and just what how it works, and it sends the it senses first and sends the data to computer. Okay, so there are, you can say there are so many advantages of a mouse, like very easy to use, not very expensive, moves the cursor faster than the arrows keys to the keyboard. Okay, so this is basically about a mouse. Okay, so game controller. So in your game controller, joystick is the best example of a game controller. You see, game controller are used mainly to play games. Okay, so game controller, जो game controllers होते हैं basically वो गेम्स खेलने के लिए यूज होते हैं, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ गेमिंग डिवाइसेस. सो देयर आर three types of gaming devices like game pads, joysticks, gaming wheels. So in this lecture we will discuss joystick first. So joystick is also a pointing device. Okay, and which is used to move the cursor position on a monitor screen. Okay, it is a stick having a spherical ball at its both lower and upper ends. Okay, this is joystick like this. Okay, so the lower spherical ball moves in a socket. The joystick can be moved in all you can say four direction, like left, right, top, and bottom. Okay, so the function of the joystick is similar to that of the mouse. It just seems like as the mouse, you can just move from left and right and top to down, and just select the text from left to right, and just click on it. It just seems like as a
joystick. Okay, so it is mainly used in computer aided design, like you see in a mechanical section on and in a mechanical department. These basically these are used for computer aided design. Like if you want to design a car and आपको ये joystick की जरूरत पड़ सकती है इसमें. Basically CAD is like a software in which you can edit and designing your car through this device, and CAD is a software where you design your car. Okay, and playing computer games also through this device. You play games also. Okay, so this is basically a game controller device and game pointing device. Okay, so in specialized input device, so these are your specialized input device. So other types of input devices include like your scanners, styluses, microphones, and digital cameras and web camera, etc. So first of all, what is a scanner? And as you see on your screen, scanner is an input device which works more like a photocopy machine. आप सबने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, और स्कैन विच स्कैन्स द पेज, और वो जो स्कैन करता है पेज को और इनपुट को ग्रैब करता है, आई वो फैच करता है उसको थ्रू पेपर. इट इज यूज्ड व्हेन समवन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर. It is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. How it works basically, scanner in simple words, when you place the paper on a scanner, and it captures the all text and sent to the hard disk. Okay, so scanner capture images from the source which are then converted into a digital form that can be stored on the disk. Okay, okay, so these images can be edited before they are printed. Okay, so it's you can say it's a very light sensitive device that helps you copy or capture images, photos, and artwork that exist on paper. Okay, so styluses is also a pointing device in which uh, consisting of thin stick that uses pressure to enter information or to click and point. Such styluses are used with the PDAs, tablet PCs, graphic tablet. So this is your styluses. This is, in other words, styluses is just like a pointing device in which you can point on your ये यहाँ पे जो पॉइंटिंग डिवाइस है ना, यहाँ पे ही चलेंगे ये जो स्क्रीन होती है यहाँ पे, पीडीए जिसको हम बोलते हैं, टैबलेट पीसीज, ग्राफिक टैबलेट्स. ओके, so microphones. So basically microphones is an input device to input sound that is then stored in a digital form. Okay, the microphone is used for various applications such as adding sound to a multimedia presentation or for mixing music. Basically used to input audio. The three main types of microphones are like desktop microphones, headsets, directional microphones. So so many types of microphones. Okay, so on your screen, digital cameras. So आप सबने ये डिजिटल कैमरा के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है ना. So digital camera are used to download images to a computer, and when you click the photo and it captures the image and post and download images to a computer, post pictures to the web, produce videos. Resolution is measured in megapixel. Higher the resolution, better the image quality, but the more expensive the camera. इसमें होता है कि कैप्चर करता है इमेज को, तो वो जो इमेज है वो सेंड करता है कंप्यूटर को थ्रू वायर. वायर इन द सेंस उसमें सारी जो पिक्सल जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल, व्हाट इज द एनीवन, कोई में से बात करता था, वो किसी को पता है कि पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है? पिक्सल क्या होता है? सो कलेक्शन ऑफ पिक्सल इज मेक अ पिक्चर, यू नो. व्हाट इज पिक्सल? यस प्लीज, कोई बता सकता है? यू हेयर माय वॉइस? जी जी बोलिए प्लीज. दिवांशु बोलिए, पता है पिक्सल की फुल फॉर्म क्या? पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट. क्या होती है? पिक्चर एलिमेंट क्या होती है?
पिक्चर एलिमेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो वेबकैम की मैंने जो वीडियो अपलोड करी है वो था, सब देख लेना, ठीक है। उसको अगर फिर नहीं समझ लगेगा मैं डेफिनेटली मैं इसको रिपीट कर दूंगा इस लेक्चर को, ठीक है, वेबकैम का। ओके, इट्स ओके टू ओके एवरीवन। सर। मैं इस लेक्चर को फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। So webcam is your video camera that can be used to take images and इसमें सारी जो images है आप क्लिक करते हो and for uploading to the web, कोई भी आप कोई किसी भी चीज को आप क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हो in your computer, ठीक है। So now it's time for polling on your screen. पोल मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ओके, सो ओके, रीड केयरफुली। ओके, एंड ऑन योर स्क्रीन जो पोल क्वेश्चन है वो आ गया हुआ है, इसको आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए एंड सबमिट करिए इसका आंसर को, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेसिंग? ओनली 15 सेकेंड लेफ्ट, बी फास्ट। ओनली 15 सेकेंड लेफ्ट, बी फास्ट। ओके, सो टाइम्स अप। सो मैं इसको एंड करने लगा हूँ, ठीक है। और ऑन योर स्क्रीन सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। प्लीज अगर किसी ने आंसर नहीं किया जल्दी आंसर करिए प्लीज। ओके, सो second question on your screen. Answer this question, be fast, थोड़ा जल्दी आंसर करिए पढ़ के। स्टूडेंट बी फास्ट, 15 सेकेंड लेफ्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन on your screen now. Okay, third question, read carefully and answer the question. The physical components of a computer are called. ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन डाला हुआ है, इसमें लग सकता है कि दो ऑप्शंस हैं बट है एक ही। इस लेक्चर को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है, और इसमें इसको मैं हिंदी वर्जन में भी कन्वर्ट कर दूंगा इस लेक्चर को। ओके, फॉर बिहार स्टूडेंट्स एंड थोड़ा सा जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा
उनके लिए मैं ये क्वेश्चन जो वीडियो लेक्चर्स है वो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, लास्ट 2 सेकेंड, जल्दी से आंसर करिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा। ओके, जल्दी से आंसर करिए बच्चे इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं खत्म करने लगा हूँ एंड पोल एंड करने लगा हूँ, सो थैंक यू। ओके, सो वेब कैम डन हमारा, वेब कैम हो गया हमारा ना। ओके, ठीक है, सो आउटपुट डिवाइसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इनपुट डिवाइसेस का मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं। सुनिए सुनिए, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? यस प्लीज। बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका जो इनपुट डिवाइसेस है आज आपके उसमें जो हमारी टॉक हो रही है इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है, वेरियस इनपुट डिवाइसेस, ओके। सो उसमें आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस, ओके। सो मैनी इनपुट डिवाइसेस जो रह गए हैं, और इसमें जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे, लाइक योर OMR, and what is OMR? Optical mark reader. And optical mark reader is a special type of optical scanner and used to recognize the type of mark made by pen or pencil, like ये देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पे ये इनपुट डिवाइसेस, इसमें जो इनपुट डिवाइसेस है इनमें जो OMR भी आते हैं, OCR भी आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं बट वो यहाँ पे आते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे, OMR, OCR, MICR। और आप सबने वो देखे भी होंगे कि वो क्या होते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड। OMR शीट आपने देखी होगी, जो आंसर जब हम पेपर गवर्नमेंट का पेपर देने जाते हैं कोई पेपर, तो वहाँ पे वो OMR शीट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं एंड यू हैव टू मार्क द एंड वो सर्कल कर देते हो, and this is called your OMR sheet. It is specially used for checking the answer sheet, okay. Basically it is specially used for checking the answer sheets of examinations having multiple choice questions, like first question, uh, and you have to answer and just blank the circle, okay. This is your OMR sheet, basically used for answering the questions, okay. So what is a barcode reader? Reader is also your input device. You see, when you purchase anything and you see on the back end, आप देखते हो कि एक बार कोड होता है, ठीक है। आप उसको स्कैन को एक बार कोड होता है
विद द हेल्प ऑफ बारकोड रीडर, एक गन टाइप होती है, उसको आप स्कैन करते हो एंड वो स्कैन होता है. लाइक बारकोड रीडर इज अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बारकोड डाटा. In your barcode lines there is a data behind it, there is a secret data, like a data in the form of light and dark lines. You see there is a straight lines and some lines are thin, some lines are थोड़ी सी वो पतली होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, वो देखे ना उसमें behind the barcode there is a data. Okay, barcoded data is generally used in labeling goods, basically where it is used labeling goods and numbering the books, sector. It may be a handheld scanner or maybe embedded in a stationary scanner. Okay, so barcode reader scans a barcode image, converts it into a alphanumeric value. वो करता क्या है? What a barcode do? A barcode reader scans a barcode image, converts it into an alphanumeric value, which is then fed to the computer that the barcode reader is connected to. मतलब वो बारकोड, जब आप बारकोड वो स्क्रीन के सामने लेके आओगे तो वो जो बारकोड रीडर है, आप वो बारकोड उसको स्कैन करता है, उसको फेच करता है, उसको डाटा निकालता है, वो रीड करता है, फिर वो प्रोसेस होता है. ठीक है. सो ऑन द अदर साइड यू सी next input device like OCR, optical character recognition. So optical character recognition आपने देखा होगा कि why basically why it is used optical character recognition. So basically OCR is an input device used to read the printed text on your sheet. There is a printed data and with the help of OCR, optical character recognition, you can read your text. Okay, you can read a printed text. OCR scans the text optically. Okay, OCR scans the text optically character by character, converts them into a machine readable code. What it means? It reads the data on your sheet, printed sheet, and it converts the data into digital code. Okay, uh, who? OCR, optical character recognition. You can say reader recognition is same thing. Okay. Um, and stores the text onto system memory, and stores the text on the system memory. So on the other side, uh, so today we will discuss input devices like keyboard, mouse, joystick, keyboards, pointing devices, game controllers, scanners, styluses, microphones, digital cameras, webcams, OCR, OMR, and last input device is the MICR. So what is MICR? Magnetic ink card reader. So basically, MICR input device is generally used in banks. You see, there is a check, and on the bottom of the check there is a MICR code. Okay, so as there are large number of checks to be processed every day, है ना, तो सब चेक्स यूज करते हो, सब चेक्स आप देखते हो, वहां पे बहुत सारे होते हैं. ठीक है. The bank code number and check number are printed on the checks with a special type of ink. So what it means, on your check, below of the check, your check, there is a code. There is a printed code with the magnetic ink, स्पेशल टाइप ऑफ इंक. वो जो स्पेशल टाइप ऑफ इंक होती है ना, तो वो वहां पे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इंक उस पे वो जो नंबर लिखा गया होता है. ठीक है. सर जी, सॉरी सर जी प्लीज लाउडली स्पीक. हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी. तो विद जो चेक होता है ना, उसके नीचे ना स्पेशल टाइप ऑफ इंक होती है. ओके. तो वो जो कोड नंबर होता है, चेक नंबर होता है, जो वो स्पेशल टाइप ऑफ इंक से बनी होती है. ठीक है. तो दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR. मतलब एक मशीन होती है. अब ध्यान से सुनिए, एक एक चेक है. ठीक है. चेक के ऊपर एक स्पेशल टाइप की इंक लगी होती है. ठीक है. एंड जो MICR है वो क्या करता है, एक स्मॉल डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर.
वो जो चेक है उस चेक को हम वो मैग्नेटिक MICR में प्लेस करेंगे या उसमें इंसर्ट करेंगे, वो रीड करेगा। किसको रीड करेगा? जो स्पेशल टाइप ऑफ इंक है, जो स्पेशल टाइप ऑफ इंक, उससे पता चल जाता है ये चेक किसका है या कौन से कोड का है या। सो द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इट इज फास्ट एंड लेस एरर प्रॉन। ओके, मतलब इसमें लेस एरर होती है। ठीक है। सो बेसिकली आज हमने क्या सीखा, थोड़े इनपुट डिवाइसेस के बारे में सीखा। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कैसे, कीबोर्ड कैसे, मैं प्रॉपर एक कीबोर्ड पे क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। एंड आज मैंने आज सब बच्चे ध्यान से, जिन बच्चों ने नहीं अभी तक मेरी वीडियोस देखी, वो काइंडली वीडियोस देखो और उसको अच्छे से सुनो। और मैं आपको PPT PDF सारी ग्रुप में अपलोड भी करता रहूंगा साथ साथ। ठीक है। तो ओके सर। लेक्चर्स को मैं इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में, बोथ में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके। जी सर। तो मैं इस लेक्चर को भी रिपीट कर दूंगा। तो आज ही मैंने एक मदरबोर्ड की एक वीडियो डाली है। ठीक है, 3D मदरबोर्ड। उसमें क्या है कि आपको 3D मदरबोर्ड के बारे में आपको पता चल जाए कि वो व्हाट इज एक्चुअली इट लुक्स लाइक, वो कैसे दिखता है मदरबोर्ड एक्चुअली में। सो प्रिंटर, जो जो टॉपिक होते जाएंगे मैं उसकी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा डे बाय डे। ठीक है, ग्रेजुअली वो उसको मैं करता जाऊंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे इनपुट डिवाइसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तो विद नेक्स्ट लेक्चर इन आउटपुट डिवाइसेस। ओके। ओके सो सर। थैंक यू एवरीवन।